Nature is the most cherished treasure. Nature is a virtue, bliss, and a solution to adversities. In fact, nature is the superlative of science. On one hand, it is an extension to the excellence of the earth, water, and sky, and at the core of this universe on the other. In every walk with nature, we receive far more than we seek. Nature has fulfilled all our desires throughout our history. We have created many complications for ourselves, but nature has an explication to each, even in the 21st century. Diabetes, sugar, sweet poison. In the chaotic process of life, while stifling to move farthest, our lifestyle has changed drastically. In this process, we did not even know when our blood arteries and vessels began to be affected by this sweet poison. Diabetes is a monstrous challenge for the world today. स्थिति बहुत ही गंभीर है। अगर हम बात करें तो हर दूसरे इंसान को शुगर हो रहा है। दुख की बात यह है कि लोग इसे अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो तब तक डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं जब तक सिवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती है। Diabetes kills slowly. It affects every organ and is an incurable disease which never leaves the body after entering it. डायबिटीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या है? दीमक की तरह शरीर को खाती है, अंदर से खा रही है, बट ऊपरी तौर पे अगर आप देखें तो पेशेंट सिम्टमलेस है। That is why diabetes is known as a silent killer. In early days, it was a disease post-60, but now it has become endemic in youth as well. Even children and pregnant females are victims of diabetes these days. According to the International Diabetes Federation (IDF) Atlas, number of diabetes affected people jumped to 6.92 crores in the year 2015 from 6.3 crores in the year 2013 in India. It is becoming pandemic with each passing day. According to the World Health Organization (WHO), there is a 100% increase in diabetes patients in India, and it might jump up to 8.7 crores in the year 2030. But the most distressing thing in India is diabetes in the youth. Diabetes is a common disease post-60 in the US, while in India, even youth fall prey to it. अगर मैं इंडिया की बात करूं, 7 से 8% लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ हो चुकी है। यानी कि अगर 125 करोड़ की आबादी माने तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 10-12 करोड़ लोगों को आज डायबिटीज़ है। लेकिन एक हिडन फैक्ट है कि लगभग इतने ही मरीज़ ऐसे हैं जो कि ऑन द वर्ज ऑफ डायबिटीज़ हैं, जिन्हें शुगर होने वाली है, जिन्हें हम मान के चलते हैं प्री डायबिटिक्स। What will happen to the country if the youth gets debilitated? The situation is very grim. The nation must address this issue, and that is why the government has started taking measures, and the best of scientific brains and science institutes have started researching to tackle this problem. After years of diligent research, they came up with a solution based on the world's most ancient medical science, Ayurveda. हमने एक जो ट्रेडिशनल हमारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में मेडिसिनल प्लांट्स डिस्क्राइब थे, उसको ठीक से स्टडी करने के बाद, स्क्रीन करने के बाद हर्ब्स सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद उसका फॉर्मुलेशन बनाया। The knowledge of Ayurveda, the world's most ancient medical science, has provided us with an infallible answer to this gigantic problem. World's first and most effective anti-diabetic herbal drug, BGR 34. It includes Daru Haridra, Vijayasar, Gurmar, Manjishtha, Methi, and Gurchi. Brief explanations about the divine properties of these herbs obtained from Ayurvedic plants are available in Ayurvedic Pharma of India and ancient literature. Ayurvedic experts since early days have utilized these herbs to control blood sugar effectively.
ये जो 6 हर्ब हमारे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है कि ये मेथी का है और मेथी की सीड का इसमें एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है और ये हिपेटो प्रोडक्टिव है, हाइपोग्लाइसेमिक नेचर है, ये शुगर को भी कम करता है। दूसरी हर्ब आप देखें ये गुड़ूची है, टिनिस्पोरा कार्डिफोलिया, इसका स्टेम यूज किया गया है। ये त्रिदोष तीनों दोषों को बैलेंस करता है और शुगर को भी कम करता है, तो हम इससे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ये विजय सार है, विजय सार जो है वो शुगर को कम करता है और प्लस डायूरेटिक है। गुड़मार है, गुड़मार भी आप देखें तो ये ब्लड शुगर को कम करता है और इस एज ए इन्हांस भी करता है इस फॉर्मुलेशन को। ये दारू हरिद्रा है, दारू हरिद्रा जो है वो DPP4 इनहिबिटर है जो प्लांट सोर्स में है और ये शुगर को कम करते हुए लीवर को भी प्रोटेक्ट करता है। After 5 years of untiring effort, a formulation has been arrived at which was very effective in controlling diabetes and also matched the international standards of allopathic drugs. ये हमारा जो फाइनल फॉर्मुलेशन है NBR मैप के नाम से ये हमारा है और ट्रेड नेम इसका BGR 34 है। It wasn't an easy process to make this formulation. Initially, all the 6 herbs were tested regarding their distinctive properties. Each of them was tested along with every possible combination to arrive at the best possible formulation. But even after this untiring effort of formulation, a clinical trial was required. In the process of vivisection, the mice were artificially treated with glucose for 21 days continuously to become diabetic. And tests like liver function, kidney function, lipid profile were performed for the final readings. बेसिकली ओवरनाइट हम लोग एनिमल्स को फास्ट कर देते हैं और सो दैट बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम नॉर्मल बेस लेवल पे आ जाए। तो फिर उसमें हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं। उनको हम लोग 2000 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम लोग ग्लूकोज पिला देते हैं। तो क्या होगा, सडनली हाफ एन आवर के अंदर ब्लड ग्लूकोज राइज करेगा। तब अब जब ये राइज कर रहा है तभी हम लोग को देखना है कि हमारा एक्सट्रैक्ट काम कर रहा है कि नहीं। अगर एक्सट्रैक्ट काम कर रहा होगा तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं, एक नॉर्मल लेवल पे ही मेंटेन रहेगा और उसी तरह से डिग्रेड करेगा। After performing all these Herculean processes, research and tests, it was certain that the final formulation met with every criterion of Ayurvedic medicines. So it was time to move to the final stages of checking the safety and efficacy, that is, testing the effectiveness of the medicine. 8-10 साइंटिस्ट ने करीब 4-5 साल तक मिलकर के लगातार इस पे काम किया, इसकी सेफ्टी पर, इसकी एफिकेसी पर और कई पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट किया गया और उसके बाद हम ये कन्विंस हुए कि हाँ ये दवा फ़ायदेमंद है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो चूँकि ये शास्त्रीय पौधे हैं, इनके डायबिटीज़ के अलावा और भी कई सारे फ़ायदे हैं जो कि मरीजों को उसके फ़ायदे मिल सकते हैं। World's first and most effective anti-diabetic herbal drug, BGR 34, has convincingly proved its authenticity and reliability after filing its patent. 10 साल से मेरा शुगर है, तो एलोपैथी दवाएं लेता था मैं। 2 साल से मैं लगातार BGR ले रहा हूँ। खरीदा, एक बोतल हमने खरीदी, जब काम करना शुरू किया दूसरी ली। The success story of BGR 34 is so impressive that the sales have reached the 100 crore mark. जब हमारी दवा BGR 34 के नाम से एमिल ने लॉन्च की तो इतनी ज़्यादा इसकी लोगों के अंदर अर्ज थी कि पहले ही साल में 100 करोड़ से ज़्यादा की सेल हुई उसकी। It has already been 4 years since the launch of BGR 34 and hundreds of Ayurvedic practitioners are recommending it to diabetic patients who are getting the benefits. Anti-diabetic herbal drug BGR 34 is most effective in pre-diabetic condition when blood sugar level is inching towards the diabetic condition but not yet there. अगर प्री डायबिटिक स्टेज में अगर आप अपना डायग्नोसिस कराते हैं, अगर ब्लड शुगर लेवल बॉर्डरलाइन डायबिटिक है, उसमें BGR 34 के रिजल्ट्स एक्सीलेंट है। मतलब उसमें कोई एलोपैथी, कोई और पैथी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
Whether a diabetic patient is in the early stage or in the severe stage, doctors are prescribing BGR 34 with confidence. सिचुएशन तो सारी अच्छी हैं। अगर प्री डायबिटीज़ की बात करूं, न्यू डायबिटिक केसेस की बात करूं या क्रॉनिक केसेस की बात करूं, तीनों ही केसेस में BGR के रिजल्ट्स मिल रहे हैं। To understand the impacts and benefits of BGR 34, one must understand diabetes properly. Diabetic condition is the situation when your glucose or blood sugar levels are higher than normal, that is, above 70 to 100 milligram per deciliter in fasting stage. There are various types of diabetes classified on the basis of blood sugar level and other symptoms. Type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestational diabetes, which is very common during pregnancy, and pre-diabetes, when blood sugar level is reaching the borderline. Upon the intake of food, carbohydrate decomposes into glucose and gets mixed into the blood, which energizes our body. Beta cells present in pancreas form an essential hormone called insulin, which ensures the entry of glucose available in our bloodstreams into the cells of our body. Insulin binds with cell receptors, which leads to the opening of passage in cells for the entry of glucose. In type 1 diabetes, these beta cells present in pancreas either stop producing insulin or secrete very little amounts. On the other hand, in most cases of type 2 diabetes, beta cells present in the pancreas produce insulin, but cell receptors are not able to properly open the passage in cells, which may lead to the entry of glucose. It results in a rise in the blood glucose level. This condition is known as diabetes mellitus in the medical science and popularly as diabetes among the masses. In the fact sheet of the World Health Organization, it is stated that 90% of the total diabetic patients are affected by type 2 diabetes. डायबिटीज़ दो तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, ये बढ़ती उम्र के बच्चों में ज़्यादातर होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मैच्योरिटी ऑनसेट होती है, जो 40-45 साल की एज में लगभग उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और ऑल थ्रू आउट द लाइफ वो इफेक्ट करती है। As mentioned earlier, type 1 diabetes can only be controlled with insulin injections. But there are chances of revival of beta cells in type 2 diabetes. With the help of proper medication, allopathic or Ayurvedic, it is possible to control insulin production and blood sugar. Various formulations are available in the process of allopathic medication, but when it comes to Ayurveda, BGR 34 is the most effective herbal drug to cure diabetes. It really takes care of the diabetes type 2 and more specifically in the initial stage or up to the level of, you can say, 120 to 140 level, it really works well. And this I am not saying, but this is the, you can say, the experience of many doctors as well as many people who have taken it. Elements of DPP-4 present in BGR 34 act as inhibitors which boost glucose tolerance and oral glucose response in insulin secretion to control blood sugar. Blended with 6 herbs or Ayurvedic plants, BGR 34 provides 34 essential phytoconstituents to the human body, which strengthen kidney, heart, retina, and those body organs that get severely affected in the case of diabetes. Not only looking into the parameters of only on the diabetes, the ingredients protects as a antioxidant and also it scavenges the free radicals. For type 2 diabetes,
BGR 34 is as good as metformin used in the allopathic process. Metformin is the allopathy medicine which is treated for the diabetic type 2. So, our product was compared with metformin, and in BHU the doctors did it, and the conclusion is very encouraging that yes, either it is at par with metformin or in certain properties and the markers it is higher than that also. The rising demand of the medicine confirms that millions of diabetic patients have benefited from BGR 34, formulated by the best scientific institutions like CSIR NBRI and CSIR CMAP. जो हमारे देश में डायबिटीज़ तेज़ी से फैल रही है, इसमें लोगों को रिलीफ देने के उद्देश्य से ये दवा डेवलप की गई और ये अपने एफिकेसी की वजह से पॉपुलर होती जा रही है। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है ये आंकना दूसरों का काम है, लेकिन हमने एक जो प्रयास किया उसका हमें संतोष है कि काफ़ी सारे लोगों को इसका अच्छा फ़ायदा हुआ है। Initially, it wasn't named as BGR 34 when formulated by NBRI CMAP. It was named NBR MAP DB. Product has been developed on the name of NBR MAP. When we transfer the technology, they marketed the product on the name of BGR 34 as a blood glucose regulator 34. An invention is successful only if produced at the industrial scale and available for the masses, and this Herculean task was executed by a reputed company with international standards, ML Pharmaceutical India Limited. The Government Institute transferred its technology to ML Pharmaceutical India Limited company, and its mass production started at Nalagarh in Himachal Pradesh. इंडिया में आज की डेट में BGR 34 आयुर्वेदिक इंडस्ट्री में जैसे मैं बताया इट इज़ रैंक नंबर 1 और ये हर केमिस्ट काउंटर्स में ऑल इंडिया में इसको आज आप पाएंगे। Before getting into this magnificent bottle and strip packing, BGR 34 has to undergo several processes which start with the raw material sourcing. दारू हरिद्रा ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऊंचाई पर पाने जाने वाला ट्री है। विजयसार ये मध्य भारत और हरिद्वार रीजन में बेस में मिलता है और इसके भी पूरे पेड़ पाए जाते हैं। इसके तने की लकड़ी को औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। गुड़मार की पत्र पार्ट को यूज़ किया जाता है और ये भी मध्य भारत में कल्टीवेशनल काफ़ी उगाया जाता है। गिलोय की बेल होती है जो लगभग पूरे भारत में प्राप्त होती है। विशेषतः बरसात के सीज़न में इसका प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये किसी भी सहारे को लेकर अपनी ग्रोथ फैल जाती है पूरी तरह से और विशेषकर नीम पर चढ़ी हुई गिलोय की उपयोगिता ज़्यादा अधिक होती है। मंजिष्ठा मंजीठ भी कहते हैं इसको, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत में इसकी कल्टीवेशन भी होती है और ये वहीं पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट से हम इसको प्राप्त करते हैं। मेथी दाना लगभग पूरे भारत में पाया जाता है, इसकी खेती होती है और हम फार्मर्स के थ्रू इसको उपयोग में लाते हैं। Before the best and certified quality stocks are prepared, cleaning, washing and drying of raw materials are a critical part of the processing. The stock prepared in the next process is charged in these boiling pans so that the medicinal extracts can be separated from them. अभी जैसा कि आपने देखा हमारे ऊपर कि आपने जड़ी बूटियों को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, वॉश करते हैं, ट्रीट करने के बाद ड्राई करके, डीडस्टिंग करने के बाद, पल्वराइज करने के बाद जब उनको एक्सट्रैक्ट लेना होता है हमने तो हम इस फ्लोर पर लाते हैं और ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है, यहाँ पर कहीं कोई मैनुअल इंटरप्शन नहीं है। The boiling pans are fully packed. The medicinal content, which evaporates in the form of steam, gets back through a condensation process.
This is an herb grinding section where powder is obtained by grinding the stalks. The prepared powder is brought in this section for process of mixing and granulation work and is once again dried. Now the powder is ready for the preparation of BGR 34. The prepared powder was loaded into the machine and then these pills, beneficial for type 2 diabetes patients, start coming out. But before packing, these pills have to undergo the process of Shilajit coating and polishing, which increases the life and quality of the tablets significantly. Now it is fully prepared to reach diabetes patients. Strip packing reaches the doctors to be given to patients for trial, and bottle packing reaches drugstores spread across the country so that patients of diabetes can easily purchase them. But before that, an important precaution must be taken. Before being sent to the drugstores, few samples from every batch of BGR 34 tablets go to labs for heavy metals and microbial analysis so that every tablet can meet the standards of Ayurvedic Pharmacopoeia of India. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में BGR 34 टैबलेट के अंदर जितने भी हैवी मेटल्स हैं उनको एनालिसिस किया जाता है। इसमें हम पहले BGR 34 टैबलेट को पाउडर करते हैं, क्रश करके उसको डाइजेस्ट करते हैं माइक्रोवेव ओवन में। उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम एनालाइज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और माइक्रोबियल एनालिसिस जो किया जाता है वो प्रोडक्ट के अंदर कितना माइक्रोबियल कंटेंट है, बैक्टीरियल कंटेंट है, फंगल कंटेंट है, जो कि हमारा फार्माकोपिया, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के लिमिट्स के अंदर होना चाहिए, उसको हम इसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं। The laborious research of 5 years by scientists from the prestigious institutes of NBRI is leading to rich results today. Thousands of type 2 diabetes patients in the country are successful in controlling blood sugar with BGR 34. देखिए, डायबिटीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि 1 डे ट्रीटमेंट, 2 डेज ट्रीटमेंट, 1 मंथ ट्रीटमेंट तो है नहीं। अगर आज किसी को 40 साल में डायबिटीज़ हुई तो उसको अगले बाकी के 30-40 साल जीवन भर उसको दवाइयाँ लेनी है। तो दवाई लेना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेफ़ होना चाहिए। इतना सेफ़ कि उस दवाई को वो अगले जीवन भर 20 साल, 30 साल, 40 साल उसको खा सकें और उसके किसी भी वाइटल ऑर्गन पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। और वो सारे गुण जो हम लोग तलाशते हैं एक परफेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन में, मुझे नो डाउट BGR 34 के अंदर मिले। The story of the successful development of BGR 34 is nothing less than an inspiration. CSIR CMAP and CSIR NBRI scientists have proved India's growing scientific potential on the international stage by providing the most effective anti-diabetic herbal drug. But one should hope for more such successes. Ayurveda presents an innovative model to leverage traditional medicine for high-quality care for growing chronic diseases. Continuous efforts to find more solutions must continue.